So let's do some examples and let's create some basic shapes using turtle graphics. Again, first we need to import from turtle import star, and then what we need to do is we set the background color to black. Since the background color is black, we need to set the color of the lines वगैरह to white ताकि contrast अच्छा हो और आपको नज़र आ जाए चीज़ें. टर्टल की स्पीड जो है हम ज़रा स्लो सेट करते हैं. So we say speed 1, and then we create the turtle object. Shelly equals to turtle. Again, it's going to give you a container जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें available हैं, including the actions of the turtle, और actions आप dot notation के साथ use कर सकते हैं. So Shelly dot color white. So अब इसने पेन का जो कलर है वो सेट कर दिया to white. Right? Let's create the first shape, and that's going to be the square. Square create करने के लिए आपको पता है कि square की 4 sides होती हैं, तो you have to do this step in a loop 4 times for I in range 4. Basically what you need to do is you need to go forward, Shelly dot forward, let's say 100 units, and then you need to turn left 90 degrees. So Shelly dot turn basically left 90. अब आप फॉरवर्ड जा रहे हो 90 डिग्रीज टर्न करें और लूप में 4 दफ़ा हर दफ़ा यही दोनों स्टेप्स आप रिपीट कर रहे हैं. सो व्हेन यू रन दिस, it did nothing. Oh, forward spelling गलत थे. Save it, run it again. Here you see कि उसने एक square basically बना दिया. It forward, turn 90, then forward, turn 90, then forward, turn 90, then forward, turn 90. It did that in a loop. What about the hexagon? Hexagon में आपको पता है कि it has 6 sides, और वहाँ पे आपने you need to move forward. अब आपने 90 degrees नहीं जाना, बल्कि you need to go to at an angle which is 60 degrees. So forward and then 60 degrees, and then forward and then 60 degrees turn करना, फिर forward and then 60 degrees. So इस तरह अगर आप turn करेंगे तो then you will see कि you have basically a hexagonal shape, something like this. Right? What about a triangle? A triangle is also simple. उसके अंदर you need to move 3 times in a loop because triangle has 3 sides. And triangle के अंदर आपको क्या करना है? You have to move forward, and then turn आपको कितना करना है? That is 120 degrees. And then you have to move forward, and then you have to turn again 120 degrees, and then you have to move forward. So that's going to make an equilateral triangle. So for I in range 3, move forward and then turn 120 degrees. So when you do that, you'll see that it creates a simple equilateral triangle. Okay, what about an n-gon? N-gon का मतलब है एक polygon जिसकी n sides हों. So अगर एक polygon की n sides हैं तो उसका जो exterior angle होगा that is going to be 360 divided by n. So for I in range n, let's say कि हम कोई भी एग्जांपल ले लें, आप 7 साइडेड पॉलीगन बनाना चाह रहे हैं, तो यू मूव फॉरवर्ड एंड देन आपने टर्न कितना करना है? दैट इज गोइंग टू बी 360 डिवाइडेड बाय n, राइट? सो इफ यू रन, आप देखेंगे कि इट्स अ पॉलीगन विद 7 साइड्स, एंड अगर आप इसको फॉर एग्जांपल 3 भी कर दो तो दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल ट्राइंगल, जो कि हम पहले कर चुके हैं. So this code can create any polygon with any number of sides, let's say 11 for the sake of this example. Save, and then we run F5. अब देखेंगे कि it creates a polygon with 11 sides. And how do we finally create a circle? Well, अगर आप इसकी number of sides बहुत ज़्यादा कर दें, let's say 300, तो you will see कि जो फिगर वो बनाएगा, और इसका रेडियस भी आप थोड़ा सा छोटा कर दें क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा था, लेट्स से 1 मे बी,
तो इट्स क्योंकि साइड्स इतनी छोटी हैं और इतनी ज़्यादा बेसिकली एंगल्स, उसका एक्सटीरियर एंगल इज सो ग्रेट, इन दिस केस इज प्रीटी मच क्लोज टू 1, तो इट अपीयर्स टू बी अ सर्कल विच इज नॉट. इट्स एक्चुअली a polygon, n-sided polygon with 300 sides. लेकिन जो सिंपल तरीका आपके पास ट्यूटोरियल में अवेलेबल है टू ड्रॉ अ सर्कल, दैट इज शैली डॉट सर्कल, और इसके अंदर यू गिव द रेडियस. तो जहाँ पे भी शैली जो है उसका डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वहाँ से स्टार्ट करेगा, एंड देन इट क्रिएट्स अ सर्कल, एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स पोजिशन समथिंग लाइक दिस. So it's a circle with radius 100. इसका जो सेंटर है दैट इज हियर. सो यहाँ से इस जगह से लेके शैली तक बेसिकली दैट डिस्टेंस इज 100 यूनिट्स. दैट्स द रेडियस. सो इसी तरह आप काफ़ी सारी शेप्स जो है वो आप बना सकते हैं यूजिंग दीज वेरी सिंपल ड्राइंग स्टेप्स एंड टूल्स.